Hey students, today in this video I'll explain you the chapter Ranthambore, a trip to the tiger heaven. So let's see what we will just learn from this chapter. Tigers are one of the world's largest carnivores and are found from the hot and humid jungles of Southeast Asia to the frigid snows of Siberia. The meaning of the carnivores is here an animal that feeds on other animals, and the meaning of heaven is here a place where animals are protected. So as the name of the chapter is Ranthambore, a trip to the tiger heaven, so meaning is a place where animals are protected. So what happened that tigers in this chapter, tigers are one of the world's largest carnivores, and that animals that feeds on other animals and are found from the hot and humid jungles of Southeast Asia to the frigid. The meaning is extremely cold. But mention the word tiger and the India comes to mind. कहते अगर हम मेंशन करें द वर्ड टाइगर सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया कम्स टू आवर माइंड द मैजेस्टिक बीस्ट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन folklores and cultures where the word tiger has become the same meaning with the strength, bravery and ferocity. The meaning of folklores is the traditions and stories of a country or a community that has a same meaning for the strength, bravery and ferocity. Once there were thousands of tigers across the entire subcontinent. Now sadly they are restricted to isolated tiger preserves scattered across the land. So here in this chapter that is explained कि पहले क्या होता था thousands of tigers जो होते हैं across the land subcontinent we can find, but nowadays the tigers preserves scattered across the land, that is isolated, restricted to the isolated. A few years ago my wife, son and I visited Ranthambore, a one-time princely hunting ground turned tiger preserve located 112 miles from Jaipur. So there is a talking about a few years ago कि थोड़े टाइम पहले, थोड़े सालों पहले my wife, son and I visited Ranthambore. तो हमने विज़िट किया था Ranthambore. Actually this is by the Ranjan. So Ranjan is explaining here the incident and we can say the journey trip to the tiger heaven. So what happened, he visited this place with the wife, son, okay, and one time we can say hunting ground. So the tiger preserve located 112 miles from Jaipur. Jaipur से इतना दूर था. The capital of Rajasthan. We stayed in a luxury tent once used to accommodate guests during tiger hunts. और हम वहाँ पे कहते स्टेड किया, हमने एक लग्जरी टेंट था वहाँ पे एंड जो कि एक टाइम पे यूज़ किया जाता था टू यूज़ टू अकोमोडेट गेस्ट ड्यूरिंग द टाइगर हंट्स के टाइगर हंटिंग के लिए आते थे एंड दे यूज एट द मोमेंट्स तो दैट इज़ अकोमोडेट इज़ अ स्पेस. द irony didn't escape us. So what's it talking about the irony? That is about a strange situation, or we can say very different from what was expected. So that was the irony and didn't escape us. That evening we went on a safari. We saw several deer who seemed alert and restless. तो हमने वहाँ पे कई तरह के जो हैं डियर देखे who were just seemed alert, जो बहुत ज़्यादा alert थे and restless थे. The forest guide said that they sensed the presence of a tiger nearby, but we saw no tigers. तो फॉरेस्ट गाइड ने ये बताया दैट इट्स लुकिंग लाइक के जो प्रेजेंस है टाइगर की वो नियर बाय है. जैसे गाइडेंस सुनो, जो गाइडेंस उनको मिल रही थी थ्रू गाइड, तो ही वाज जस्ट टेलिंग दीज थिंग्स कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अपनी सेंस से ऐसा लग रहा है कि टाइगर हमारे पास है, जहाँ हमारे नियर बाय है. बट वी सॉ नो टाइगर्स, बट हमें तो कोई टाइगर मिला ही नहीं. स्लाइटली डिप्रेस्ड वी वेंट टू बेड होपिंग फॉर अ बेटर लक द नेक्स्ट डे.
So slightly we were also depressed and we went to bed. तो हम bed पे चले गए hoping for a better luck for the next day कि yes definitely कल को हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा. Next morning we woke early, had a tea and biscuits and left for a second safari. तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही हम जल्दी उठे और नेक्स्ट सफारी के लिए निकल पड़े. इट वॉज स्टिल डार्क एंड फ्रीजिंग कोल्ड. बहुत ज़्यादा डार्क था, फ्रीजिंग कोल्ड थी एज वी वॉक अर्ली. तो हम अर्ली निकले थे, तो दैट वॉज जस्ट लुकिंग द एटमोसफेयर, दैट वॉज अ फ्रीजिंग कोल्ड. वी हैड स्वेटर्स, जैकेट्स, बट वर स्टिल ग्लैड फॉर द ब्लैंकेट्स दैट वर इन द जीप. हाउएवर हमने ये सब चीज़ें वेयर की थी, स्वेटर्स एंड जैकेट्स, बट स्टिल हमारी डिमांड थी दैट देयर शुड बी अ ब्लैंकेट्स दैट वर ऑलरेडी इन अ जीप. Routes in the forest were selected by the lottery. I drew a number and we proceeded into the forest. Actually जो routes है वो जो select किए जाते थे by lottery, एक टाइप की slip निकाल के I drew a number और मुझे एक number मिला जो we proceeded into the forest. We drove for a while on the prescribed route. We saw fresh bug marks, a hopeful sign. Then हमने कुछ जो निशान थे एनिमल फुटप्रिंट्स वी कैन से, तो मैंने एक साइन देखा जो मुझे होपफुली ऐसा लग रहा कि येस आज हम टाइगर को देख लेंगे. वी केम अक्रॉस 3 हिमालयन ब्लैक बियर्स, अ मदर विद 2 cubs. तो डेफिनेटली हम केम अक्रॉस हुए 3 हिमालयन ब्लैक बियर्स के साथ, अ मदर विद 2 cubs. दे केम फ्रॉलिकिंग डाउन द हिल साइड राइट इन फ्रंट ऑफ आवर कार. Frolicking is happily playing and moving about. They were very happy. Okay, so turned and ran. They were hilarious to watch, but kicked up so much dust that it was hard to get a good photo. कि वो इतना ज़्यादा खेल रहे थे दैट इट वाज लुकिंग गुड एंड बट क्या हुआ, उन्होंने इतनी ज़ोर ज़ोर से वो भाग रहे थे, तो जो धूड़ है वहाँ की, डस्ट है, तो ये जो रंजन कुमार है वो उन्हें ऐसा लगा कि इट्स इम्पॉसिबल टू टेक अ गुड फ़ोटो, तो उनको अच्छी फ़ोटो लेने में प्रॉब्लम आई. Still no tiger. The sun rose. The temperature started to rise along with our anxiety. We continued driving with a sharp lookout on all sides. Like the sun rose, the temperature started to rise. तो इतनी ज़्यादा ठंड होगी that along with our anxiety, and we were also in a full of anxiety that अब क्या करें, that we are unable to see the tiger. So suddenly as we were driving up the slope of a hill, we saw the silhouette of a tigress against the skyline right next to the car track. तो हमने एक जो है टाइग्रेस को वहाँ पे देखा. She turned and started walking away from us. So the driver drove faster to catch up. हमने कैच करने की कोशिश की so that हम जो पिक्स ले सके. We gazed spellbound. She was a magnificent animal, beautiful, fearless. So we just completely impressed by the tigress. Actually she was a we can say that beautiful and fearless animal. She paused behind a bush and turned to look at us. तो उसने पॉज किया behind a bush and turned to look at us, और हमें हमारी टर्न करके हमारी तरफ देखने की कोशिश की. Her coat was bright orange with jet black strips and blended perfectly with the dry leaves of the winter forest. At that moment I truly understood the meaning of the camouflage and how tigers are so stealthy. That is the meaning of secret, and we were just feeling like that. And the next is effective hunters. I told the driver to stop, grabbed my camera and took a photo. So I told the driver to stop, कि stop करो, grab my camera and take a photo of mine, and we can also take a photo of the tiger. So we returned to the camp with a great joy. It is very rare to see tigers in the wild, and we were extremely fortunate to see the tigers and the bears. So we just returned back to our camp and we were very happy कि yes आज हमने finally tigers को देख लिया है, and with the bears also, with the cubs. We left with incredible memories and great photos.
हमने बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ और कई तरह की मेमोरीज़ जो हैं वहाँ पर कलेक्ट की. द पिक्चर ऑफ द टाइग्रेस इज़ नाउ माई कंप्यूटर स्क्रीन सेवर. And here Ranjan Mukherjee is saying that I just saved that picture today, and the picture of the tigress is now my computer screensaver. It elicits gasps of admiration from the viewers and gives me a chance now and then to tell the story of our encounter with the tigress. The meaning of elicits here gets a reaction of out of somebody that we were very happy, and even now कि जब भी कोई मेरी जो ली हुई पिक को देखता है ऑफ द टाइग्रेस, सो हम व्यूअर से बहुत ज़्यादा कमेंट्स लेते हैं, एंड दैट गिव्स मी अ चांस नाउ, एंड ऑलरेडी ये मेरे को चांस देता है देन टू टेल द स्टोरी ऑफ आवर इनकाउंटर विद द टाइग्रेस, सो दैट मैं उनको जब वो मेरे से पूछते हैं कि फ्रॉम वेयर यू जस्ट यू नो टेक दिस पिक, तो मुझे एक चांस मिलता है सो दैट मैं अपनी जो जर्नी है, जो मेरा इनकाउंटर हुआ है विद द टाइग्रेस, तो मैं वो सबको एक्सप्लेन कर सकूं. सो स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर चैप्टर रैंथम्बोर, अ ट्रिप टू द टाइगर हेवन.